हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू धन धन की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ अमित पोपट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। मैं मेरा इंट्रोडक्शन आगे दे दूंगा। आज हम एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल सेशन के लिए आज आप और हम यहाँ पे बैठे हैं एंड दैट इज अबाउट यू नो सो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट HUF, एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सुपर टूल फॉर टैक्स प्लानिंग, for saving some of your tax. So I'm sure you will love that. Definitely आप लोगों ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर आपके इंडिविजुअल रिटर्न्स वगैरह भर दिए होंगे। 15-16 नवंबर वाज द लास्ट डेट। बट अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हो तो आई एम वेरी मच श्योर आने वाले दिनों में नहीं, आने वाले ईयर्स में you will get a tremendous benefit in terms of how much money you can save. So let's get started. Are you all ready? Just give me some energy in the chat box so that we can get going. Just type in ready in the chat box and we will get going, my dear friends. I'm going to share my screen as well. Let's continue. Let's jump in. So we are talking about, uh, you know, tax planning or tax savings with HUF. अब जब हम बात करते हैं टैक्स सेविंग्स की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम इस बात को समझे कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि इस सेशन को हिंदी में रखना है। ठीक है, विल कंटिन्यू द सेशन इन हिंदी। हिंदी में बात करेंगे। सो टैक्स सेविंग विद HUF क्या होता है एग्जैक्टली, टैक्स सेविंग क्यों होता है। चलिए 30-40 मिनट्स में एक अपन बर्ड आई व्यू लेंगे एंड आई एम श्योर आपके लिए काफी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज है, कमेंट बॉक्स में बता दे रहना। कमेंट बॉक्स इज एब्सोल्युटली इन फ्रंट ऑफ मी गाइस। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं टैक्स सेविंग्स, ऑफ कोर्स सबको टैक्स बचाना अच्छा लगता है, राइट? एवरीबॉडी लव्स टू सेव द टैक्स। आई एम श्योर यू आर आल्सो वन ऑफ देम। अगर टैक्स सेविंग अच्छा लगता है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि टैक्स सेविंग ना लोग दो तरीके से करते हैं। वन इज अ टैक्स इवेजन एंड वन इज अ टैक्स प्लानिंग। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, टैक्स इवेजन इज इलीगल। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं, ना कभी करना चाहिए। यू शुड डू समथिंग विच इज विद इन द लिमिट ऑफ लॉ, राइट? सो टैक्स इवेजन अगर बहुत सिंपल समझाऊं तो आप कुछ गलत कर रहे हो, आप अपनी इनकम है बट नहीं दिखा रहे हो, गलत खर्चा दिखा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। हमें उसमें नहीं जाना। वी आर ऑल अमेजिंग पीपल, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सेकंड इज इट लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग। ये आप सबको करना चाहिए गाइस। अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग प्रॉपर करोगे, मैं आने वाले 25-30 मिनट के अंदर आपको दिखाऊंगा कि अगर आपकी टैक्स प्लानिंग प्रॉपर है, जिसका एक टूल HUF है, you can save a lot of money. And I'm sure you will love the session as I move forward. तो टैक्स प्लानिंग कैसे हो सकती है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल। हम कॉर्पोरेट्स यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल्स अपना टैक्स प्लानिंग दो टूल्स के द्वारा कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। कुछ एग्जांपल दे दूं, इंडिया में जितने भी वेल्दी लोग हैं, दे ऑल हैव देयर प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। अगर आपको पता होगा कि टाटा की जितनी भी कंपनीज है, TCS है एंड ऑल दैट, इट इज हेल्ड बाय टाटा सन्स। एंड टाटा सन्स के 67% शेयर्स इज हेल्ड बाय टाटा ट्रस्ट, राइट? तो ये उनके पब्लिक फैमिली ट्रस्ट है, विच इज अ वेरी गुड टूल फॉर टैक्स प्लानिंग। एंड सेकेंड जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज HUF, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट? HUF इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक लीगल एंटिटी के तौर पे एक्सेप्ट है, मान्य है। इट इज वेरी मच लीगल। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप HUF टूल का प्रॉपर इस्तेमाल करो, प्रॉपर यूज करो, तो आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। कैसे, उसको हम आगे देख रहे हैं। आगे जाऊं उसके पहले, क्योंकि हम अगली और 25-30 मिनट साथ में रहने वाले, सो आई टॉक अबाउट माई सेल्फ इन जस्ट ब्रीफ. So I'm a chartered accountant by qualification. I qualified as a CA in November 2011. I'm an All India rank holder in my CA PCC 2009 examination. I was an All India rank holder. I scaled 41st rank in CA PCC examination at All India level. I got 12 plus years of trading experience, and I'm guiding traders for trading automation. As आपने introduction में भी देखा होगा, thumbnail में भी देखा होगा, I'm an algo trader.
I trade in commodities and Nifty Bank Nifty. Majorly of late I've been trading in commodities. And I would advise you guys also, अगर आपने commodities explore नहीं करा है तो जरूर से करें. I'm author of the book Beyond Strategies Why Psychology Matters in Option Trading. This book is available on Amazon. It is a bestseller, so you must read it if you want to become a better trader. I'm authorized partner with Dhan, right? So it is not कि मैं यहाँ पे गेस्ट के तौर पे यहाँ पे धन की चैनल पे बोलने आया हूँ. धन is like a home for me. A beautiful partnership we have had with Dhan, and we are expecting to continue for a long time. And I'm a learner. The biggest and the most important thing is I'm a learner. So now let's get into the technical part about HUF. What is the process? What is the tax benefit, and how much you can save? We can talk about everything in just about two time. So HUF is a short form of Hindu Undivided Family. अब HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक लीगल एंटिटी है, जैसे मैंने बताया इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा भी मान्य है. और हम यहाँ पे ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट आपको बता देता हूँ कि HUF इज फॉर्म्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट. हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख कोई भी HUF बना सकता है. इट इज नॉट लाइक हिंदू मतलब ओनली हिंदू. Jain can have the HUF, Buddhist can have the HUF, Sikh can also have the HUF. A married couple with one child can have the HUF. Now, what are the benefits of HUF? Why should we form HUF? कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ पॉजिटिव्स भी है. आपके क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, आई एम रीडिंग दैट. आई विल बी श्योरली एबल टू, आई विल बी आंसरिंग दैट एज वेल. ओके. So, see, Morningstar has asked me one question, parents HUF account. See, if you are married, you can also have your own HUF. Like my father also have an HUF. I am a member of that. And also I have got my separate Amit Popat HUF. Okay, so once you are married, you can have your own HUF as a separate entity as well. An individual, especially salaried person, can save a huge tax with proper tax planning through HUF. Now, any individual can do the better and efficient tax planning with the help of HUF, but मैंने यहाँ पे स्पेशली एम्फेसाइज किया है सैलराइड पर्सन, बिकॉज देखो जो इंडिविजुअल बिजनेस करता है वो अपने काफी खर्चे ना एक्सपेंस साइड पे दिखा के उससे टैक्स सेविंग कर सकता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, बट उसका अगर बिजनेस है, प्रोप्राइटर बिजनेस है, ही कैन टेक डिडक्शन ऑफ सो मेनी एक्सपेंसेस दैट ही डज. जैसे अगर मैं प्रोप्राइटर बिजनेस हूँ, मैं कार चलाता हूँ, तो मैं पेट्रोल एक्सपेंस को वहां से डिडक्शन के तौर पे लेके मेरा टैक्स बचा सकता हूँ. मैं मोबाइल को बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूँ, मोबाइल का डेप्रीशिएशन माइनस करके टैक्स बचा सकता हूँ. बट यार सैलरीड पर्सन कैन नॉट डू ऑल दैट. सैलरीड पर्सन ऑल्सो ड्राइव्स कार, दे ऑल्सो यूज द मोबाइल, उनको भी डेप्रीशिएशन लगता है, बट of course they cannot claim the benefit and hence they pay a lot of tax. So if you use HF at least for your investing activities, you can save a lot of money. HF बनाने की प्रोसेस क्या है? As I said, अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली तो HF हिंदू सक्सेशन एक्ट से ही बन जाता है. Like you get married and you have kids, your HUF is as such formed. And in fact, there are some judgment of Supreme Court which also says that you also don't need kid to form the HUF. Once you're married, there is an HUF by Hindu Succession Act. बट जब हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जब हम इनकम टैक्स में जाते हैं तो आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए सेपरेट. तो आपको एक सेपरेट पैन कार्ड पाने के लिए you have to create affidavit or a deed. You can contact your CA, you can contact your lawyer, और उस एफिडेविट या डीड के बेस पे आप पैन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका HUF के नाम पे एक पैन आ जाएगा. उस पैन के आधार पे आप अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो. एंड एज यू हैव योर ओन पैन कार्ड, जैसे आपका एक पैन कार्ड होगा, आपका एक बैंक अकाउंट होगा, जैसे आप एक एंटिटी हो, जैसे अमित पोपट इज एन एंटिटी, मेरा पैन कार्ड है, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा एक एग्जिस्टेंस है. एफिडेविट और ये पैन कार्ड बैंक अकाउंट के बाद HUF भी आपके लिए एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगा. अब आपका सवाल होगा कि अमित ये क्यों करें? ऑफ कोर्स समझदार को इशारा काफी होता है कि अगर आप एक नई एंटिटी, नया इंडिविजुअल खड़ा कर रहे हो, तो एज ऑफ नाउ अभी जो रिसेंट बजट में हमारे फिनेंस मिनिस्टर जी ने जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट दी है 12 लाख रुपए की, आपके लिए एक और
12 लाख रुपए का मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट ओपन हो जाएगा जैसे ही आपका एचयूएफ फॉर्म हो जाएगा. Is it clear? Can I get yes? I just want to check the energy. My voice is proper, loud, going, my presentation, everything I want to check. So can I get a yes on this, please? I'm reading each and every comments, please. Yeah. So HF formation process is actually very easy. And I'll tell you one funny part. I'll tell you one funny part. Okay. मेरे नाम के आगे सीए लिखा हुआ है. मैं बाई बतौर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट डूइंग एनी सीए प्रैक्टिस. सो अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहोगे कि अमित आप ही हेल्प कर दो मुझे एचयूएफ बनाने में, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट डू एनी ऑफ दैट वर्क. राइट. आई एम मेनली इनटू ट्रेडिंग ऑटोमेशन. आई हेल्प द पीपल टू take the trading to automation algos. I'm partner with Dhan, and these are the things I do. So this is just I want to clarity because many people feel like okay wow Amit you are a CA, आप इसीलिए यहाँ पे आए हो, चलो आप ही हेल्प कर दो. No guys, I don't even file my own individual income tax return. Okay. I even don't file my own ITR. Okay, I think energy is good. Super clear. Thank you so much, everybody. You guys are amazing. I can see this energy in the room is super, super, super awesome. Thank you so much. God bless you, everybody. Let's continue further. So I'll just talk about income tax slab rates for financial year 25-26. मैंने यहाँ पे सीए की लैंग्वेज में कुछ भी नहीं रखा है. सीए की लैंग्वेज में देयर इज फाइनेंशियल ईयर, देयर इज असेसमेंट ईयर, बट वो सब जोल जाल में आपको नहीं पढ़ना. आई विल टॉक अबाउट मनी विच यू गाइस अंडरस्टैंड. सो फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से जो ईयर शुरू हुआ, जो 31 मार्च 2026 को कंप्लीट होगा, उसमें मतलब उसका रिटर्न आप भरोगे अगले सितंबर में. अभी आपने कल परसों में अगर कोई रिटर्न भरा है तो दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25. उसमें स्लैब रेट्स क्या रहेंगे एज पर द न्यू टैक्स रेजिम. ओके, आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फॉर न्यू टैक्स रेजिम. आई एम नॉट डिस्कसिंग ओल्ड टैक्स रेजिम. सो up to 4 lakh you got nil. 4 lakh to 8 lakh you pay income tax at the rate of 5%. 8 lakh to 12 lakh you pay income tax at the rate of 10%. 12 lakhs to 16 lakhs you pay income tax at the rate of 15%. 16 to 20 lakhs you pay income tax at the rate of 20%. 20 to 24 lakhs you pay income tax at the rate of 25%. And above 24 lakh 1 rupee you are paying an income tax at the rate of 30%, which is the highest slab rate in India. Education says and all that are different. I'm just talking about basic because whatever is going to be your tax amount, उसके ऊपर वो सेस वगैरह जो भी होगा वो कैलकुलेट करा जाएगा. Surcharge is a different thing. I just want to keep the things simple as of now. Okay. So these are the slab rates. Now, next thing, what are the benefits of HUF? As I said, डबल एक मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमित पोपट हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ और मेरे नाम पे 24 लाख रुपए का इनकम आता है. जस्ट फॉर एग्जांपल 24 लाख रुपीस का इनकम मेरे नाम पे आता है, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. बिकॉज एफएम मैडम ने कह दिया है कि भाई अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना है, और वो टैक्स स्लैब रेट्स अभी अभी मैंने डिस्कस करे. बट सपोजिटली अगर 12 लाख रुपए की इनकम मेरे नाम पे आ रही है and balance is in the name of HUF. So I hope you're getting what I'm trying to say, right? So this is double minimum exemption limit that you can claim. 12 लाख आपको इंडिविजुअल को भी मिलेगा एंड 12 लाख या जो भी है एज पर द फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर वो आपके HUF को भी मिलेगा. आगे जाके बजट्स में जब जब ये मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट रिवाइज होगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आने वाले ईयरों में ये 12 लाख से 15 लाख होता है, 15 से 20 होता है, 25 होता है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. तो जितना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इंडिविजुअल नाम पे मिलेगा उतना ही आपको HUF के नाम पे भी मिलेगा. सो दिस इज व्हाट द पॉइंट डबल मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट. इट रिड्यूसेस द टैक्स स्लैब्स. देखो फिर से पीछे जाता है. अगर फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 24 लाख रुपए है तो मैं 20 लाख से 24 लाख पे 25% पे करूंगा. बट अगर मेरी कुछ इनकम इंडिविजुअल नाम पे, कुछ इनकम HUF के नाम पे, तो दोनों जगह पे टैक्स रेट्स रिड्यूस हो जाते हैं. आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल अगर दोनों जगह पे इंडिविजुअल पर HUF पे
16-16 लाख हुआ है, चलो 32 लाख हो गया। तो 32 लाख अगर इंडिविजुअल नाम पे आता तो मैं 30% पे टैक्स पे करता ऑन माई इनकम अबाउट 24 लैक्स। बट अगर वो 32 लाख को मैं हाफ कर देता हूँ तो मेरा टैक्स रेट जो है वो मैक्सिमम स्लैब रेट 15% तक भी जा सकता है। ओके, सो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। आई वांट टू डिस्कस फ्यू टर्म्स, क्योंकि जब आप इवन डीमैट अकाउंट ओपन करने की कोशिश करोगे धन के साथ, तब ये टर्म शायद आपको सुनने में आ सकती है। सो आई थॉट लेट मी क्लियर इट। एक टर्म जो एचयूएफ के अंदर बहुत क्लियर है, दैट इज कॉल्ड कर्ता। कर्ता इज द हेड ऑफ एचयूएफ। जनरली इट इज सीनियर मोस्ट मेल मेंबर इज द कर्ता इन एचयूएफ। लाइक अगर मेरे फादर का एचयूएफ है, my father's is name is starting for P. So if there is PL Popat HUF, Karta will be my father. I have got my separate HUF, Amit P Popat HUF. So Amit P Popat HUF ka Karta will be me. Okay. So generally senior most male member is the Karta of HUF. हम टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे हैं, इनकम टैक्स जजमेंट वगैरह में नहीं जाते हैं, बट ऑफ लेट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जजमेंट्स दिए हैं कि इवन सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर कैन आल्सो बी द कर्ता। बट वो लिटिगेशन पार्ट होगा, उसमें हम लोग नहीं जा रहे। आई थिंक आपके लिए इतना सफिशिएंट है। सेकेंड टर्म इज कॉल्ड को पार्टनर, अ मेंबर ऑफ एचयूएफ हु बिकम्स पार्ट ऑफ एचयूएफ बाय बर्थ। अब जैसे मेरे फादर का एचयूएफ है और मेरा बॉर्न हुआ, देन आई एम कॉल्ड को पार्टनर। जब मेरे ब्रदर का बॉर्न हुआ था, ही इज नॉट एज अ को पार्टनर। अब समझो मेरी शादी हुई एंड माई वाइफ ज्वाइन माई फैमिली, सो शी इज नॉट को पार्टनर, शी इज नॉट एज अ मेंबर। तो इनकम टैक्स एक्ट या तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में मेंबर का जो डेफिनेशन दिया गया है, इट इज एनी मेंबर हु इज नॉट को पार्टनर। बट आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि डॉटर इन लॉ जो फैमिली की बहू होती है, शी इज आइडियली अ को पार्टनर। अब जैसे मेरा एचयूएफ है अमित पी पोपट एचयूएफ, सो वी आर थ्री पीपल। आई एम कर्ता, माई वाइफ एंड माई डॉटर। सो माई डॉटर इज अ को पार्टनर। ओके। अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, आफ्टर मैरिज if my daughter goes to some other family, my daughter has got equal right in my HUF even after her marriage. Yes, fact of the matter is कि उसके मैरिज के बाद she will be member of some other HUF as well, but she has got the right in my HUF. Now, अगर आप HUF के डीमैट ओपन करवाते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? अगेन आई से डबल टैक्सेशन बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो फाइनेंशियल 25-26 के लिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लिमिट है 1,25,000, तो वो भी आपको इंडिविजुअल नाम पे भी मिलेगा, एचयूएफ पे भी मिलेगा। नो टैक्स ऑन एफएनओ अंडर सेक्शन 4480, ये टेक्निकल है, सो इट्स ओके। एन इन्वेस्टमेंट डन बाय एचयूएफ एंड डिविडेंड इज रिसीव्ड। अगर एचयूएफ ने इन्वेस्टमेंट करा है और डिविडेंड भी एचयूएफ के नाम पे आएगा, तो वो डिविडेंड एचयूएफ के नाम पे टैक्सेबल होगा। तो अगेन जो मैंने पहले बेनिफिट बताया कि रिड्यूसिंग टैक्स स्लैब एंड ऑल दैट, वो बेनिफिट आपको वहां पे इक्वल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फेयर इनफ। हाँ बिल्कुल। सी एचयूएफ का बिजनेस कुछ भी हो सकता है। HUF can do business. HUF can receive professional fees, of course, not as a CA, as a lawyer and all that. और HUF का main business buying and selling of securities हो सकता है। Morningstar, I hope I answered your question. Right? Buying, selling of shares can be the main business of HUF. It can be done. It is very much legal. Fair enough. Now let's take a deep dive into HUF tax benefit. Okay, I just want to check one more time energy. How's the Josh? Everybody am I going good? Are you guys understanding? Are you guys finding it very useful? How is the Josh? Hi, I just want to see some comments before I deep dive into HUF tax benefit. I'll give you an example as well, but I just want to check how's the Josh. Okay, awesome. So let's take an example. हम example के जरिए समझते हैं, and I'm sure you guys will understand it far better. So Mr. Sanjay has got a salary of 20 lakh rupees and 10 lakh rupees of dividend income. वहां पे एक जीरो शायद कम हो गया, from
शेयर्स इन द लिस्टेड कंपनी। समझो ये संजय जी की इनकम है, 20 लाख रुपीज का सैलरी है और उसको कुछ डिविडेंड भी मिलता है। अब लेट्स अंडरस्टैंड द केसेस वेयर इन्वेस्टमेंट इज डन इन द सेल्फ नेम। संजय जी को पता नहीं कि देयर इज अ टूल कॉल्ड एचयूएफ और उसने खुद से ही सैलरी रिसीव करी, खुद के ही नाम पे सारे इन्वेस्टमेंट करे, तो क्या होगा? और अगर आप एचयूएफ को कंट्रीब्यूट करते, इफ यू कंट्रीब्यूट टू एचयूएफ एंड यू बाय शेयर एसेट इन द नेम ऑफ एचयूएफ, देन व्हाट विल हैपन? मैं आपको यहाँ पे टैक्स कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। सो वी गॉट टेबल सोर्स ऑफ इनकम सेल्फ नेम, मतलब एक जो पहला कॉलम है, इनफैक्ट लेफ्ट से दूसरा, पहला है सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड कॉलम जो है विच इज कॉल्ड सेल्फ नेम। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट खुद से नाम पे किया, संजय जी ने अपने ही नाम पे इन्वेस्टमेंट करे हैं। और दूसरा जो आपको कॉलम दिख रहा है वो ये है कि उन्होंने एक एचयूएफ फॉर्म करा है, सैलरी उनके नाम पे आ रही है और इन्वेस्टमेंट जो है वो एचयूएफ के नाम पे, तो क्या टैक्सेशन हो सकता है? तो इनकम टैक्स में ना देर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एंड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये 5 सोर्स ऑफ इनकम्स है। एंड बिजनेस प्रोफेशन: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो ये 5 इनकम है जो रिलेवेंट है, ये वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो संजय जी हैज गॉट अ सैलरी ऑफ 20 लाख रुपीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिविडेंड 10 लाख, उन्होंने उनके ही नाम पे लिया हुआ है, तो उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई 30 लाख रुपीज। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, नेट टैक्सेबल इनकम जो उनका हो जाएगा दैट इज गोना बी 29,25,000। टैक्स पेएबल वो जो स्लैब रेट्स मैंने आपको दिखाया उसके हिसाब से आ जाता है 4,75,800। और ऑफकोर्स जो लोग सैलरीड है वो तो अंडरस्टूड कर ही रहे होंगे, बट स्टिल ये जो टैक्स पेएबल है वो आपके एम्प्लॉयर, डिविडेंड का छोड़ दो, आपकी जो सैलरी इनकम है उसका टैक्स आपके एम्प्लॉयर खुद ही टीडीएस के तौर पे डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं बेस्ड ऑन योर इनकम कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट। नाउ देन अगर एचयूएफ के नाम से है तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ क्या होगा? तो सैलरी इंडिविजुअल के नाम पे आएगी 20 लाख रुपीज और 10 लाख का जो डिविडेंड इनकम है वो आ रहा है एचयूएफ के नाम पे। तो मेरे इंडिविजुअल नाम में या तो संजय जी के इंडिविजुअल नाम पे जो टैक्सेबल इनकम आई दैट इज 20 लाख रुपीज और एचयूएफ के नाम पे आई 10 लाख रुपीज। स्टैंडर्ड डिडक्शन इंडिविजुअल को सैलराइड एम्प्लॉय को मिलेगा 75,000, एचयूएफ को बिकॉज देर इज नो सैलरी देर इज नो स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 19,25,000 और वहां पे इनकम हो जाएगी 10 लाख रुपीज। अब आप वो जो मैंने स्लैब रेट बताया कि अप टू 4 लाख नील, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 से 16, 16 से 20, उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करोगे। वैसे मैंने तो करके ही रखा है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इंडिविजुअल नाम पे जो आपका टैक्स आएगा दैट विल बी 1,92,400। ओके, दैट विल बी द टैक्स दैट मिस्टर संजय विल बी पेइंग इन हिज इंडिविजुअल नेम। और 10 लाख रुपए पे पहले 4 लाख तो टैक्स फ्री है, 4 लाख से 8 लाख पे 5% होगा, मतलब वहां पे 20,000 का टैक्स आएगा। 8 से 10 और आपका 10% लगेगा तो वहां पे 10% लग जाएगा, तो वो आपका 40,000 हो जाएगा। और सेस वगैरह मिला लो तो आपका एचयूएफ का जो टैक्स आएगा दैट इज कॉल्ड 41,600। टोटल टैक्स आप जो पे करोगे इन केस यू मेड द इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ एचयूएफ। अगेन आप मुझसे पूछोगे कि अमित एचयूएफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने का हाउ कैन आई डू दैट? So number one, form an HUF by a deed or something. Get the PAN card, get the bank account ready, and open Demat account. And the best part is, the best part I want to talk about, guys, is that Dhan, if I'm not wrong, is the only broker in India. I think Dhan team will be able to help me more on that. Dhan is the only broker in India जिसने HUF का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन किया है। ओके, सो that's really kudos to Dhan team. एज ऑफ नाउ आपको मैं बता दूं
कि almost every broker of India has got online process for Demat account opening for individual. बट अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनीज के डीमैट अकाउंट ओपन करना है, देन द प्रोसेस इज ऑफलाइन, क्योंकि वहां पे आपको एमओ एओए शेयर करना पड़ता है. एमओ एओए में आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज का चेक करना पड़ता है एंड ऑल दैट. So that is something that every broker has kept is offline. But the exception is Dhan is the only broker, if I'm not wrong, and hope I'm not wrong, in India who has made HUF Demat account totally online. और धन के साथ अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, you can open your HUF Demat in just 10 minutes time. It's totally online. It will only take 10 minutes and it is totally free. Okay. Demat account opening is free and maintenance is also free. So you guys can take the benefit of that. अब यहाँ पे आपका जो टैक्स आएगा टोटल इंडिविजुअल नाम पे आपका टैक्स आ रहा है 4,75,000. With HUF your tax is 234 and अप्रोक्सीमेटली आपका 234 233 के आसपास का टैक्स सेविंग्स हो जाता है. सो दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ how you can take the benefit of HUF, which is a legal legitimate tool. As I'm saying, the object of the session is not at all to go into the technicalities, and I don't want you guys to become chartered accountants and lawyers and all that. I'm sure you are happy with your own life. My job, my objective over here in taking this 30-minute sharp crisp session was to give you a fair bit of idea about how you can do that, how you can do your tax planning with the help of HUF. And I hope I served the purpose. I hope I served the purpose. How many of you are feeling that, okay, the purpose is served? Can I get thank you or something in the chat box? हाँ, मुझे मेरे ना एक मेंटोर ने सिखाया है कि हक से मांगो. So I'm asking for that. Okay. Meanwhile, you guys are typing thank you and all that. I'll be taking your questions as well. No, salary आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ना यार. हिमांशु शुभम, हिमांशु शुभम आपका क्वेश्चन है कि मैं सैलरी हूँ, मेरे ब्रदर का HUF है, वहां पे कोई इनकम नहीं. ब्रदर आप सैलरी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? यू कैन नॉट ट्रांसफर सैलरी भाई. Okay, him Aga says how to transfer money to HUF without clubbing income. You can contribute to HUF. और अगर आप HUF को गिफ्ट भी देते हो, there is no gift is not taxable, but हाँ उस पे जो इनकम आएगी that is taxable. So you can contribute to HUF. Okay, you can contribute to HUF. So guys, happy to help. Please feel free to connect with me. This is my number. I'll give you my email ID as well. This is the office. We are situated at Ahmedabad. As I said again, at the beginning of my session, I'm basically an trader. I'm an algo trader. I'm authorized partner with Dhan. We are associated with Dhan for last more than 2 years. It's been a beautiful journey. And as I said in the beginning, I would like to tell that again. मैं यहाँ पे ये session लेने हैं. I'm not come here to take the session as a guest or something. It is my home. It is my duty that whenever Dhan needs me, and if I can contribute in any way to Dhan, I always feel happy. So thank you so much everybody for listening to me. And now in next 10 minutes, we're gonna play a video about how to, open HUF account in Dhan. So I'll request Tushar as well to please give me link over here in the chat box so that we can play the video. And guys, your HUF account opening can be done in just 10 minutes time. Okay. So thank you so much everybody one more time for listening to me so patiently. You all are amazing. You all are brilliant. And I feel so happy to get interacted with you. Do let me know if I can help you in any of the way. And happy to help. Thank you so much. You guys can also stay in touch with me.
by following my YouTube channel, which is called CA Amit Popat. And also I'm super active on my Instagram, which again reads as CA Amit Popat. So you can follow me there. Okay. I am super active on YouTube and Instagram. You can follow me. I don't have any active Telegram channel, so don't get into that trap. Let's play the video. Let's understand how to open free Demat account in Dhan. Again, thank you, big thank you from bottom of my heart to each and everybody of you, to Dhan founders for building such a beautiful platform. And guys, once you start trading in Dhan, you will feel the speed, you will feel the magic, the UI. I can tell you not because I am just authorized partner with Dhan, but been in this industry for 12 years. I've traded with many brokers, but I can tell you that as a trader, shifting to Dhan was the best decision of my life. And doing partnership with Dhan was again the second best decision of my life. So do experience Dhan magic. Let me play the video. And I'm signing off from here. Thank you so very much, each and everybody. God bless you. Thank you. I'll just play the video for you guys. You can save taxes on your investments. Ever heard of an HUF account? Let me explain. In India, families usually invest together. An HUF is just okay. Just give me a second. Then team, just make me host so that I can share the audio, because otherwise audio will not go to people. Before I play the video, just make me host. Otherwise, I'll not be able to share the sound. Yeah, I'm host. I don't know why. Okay. Then team, can you please check from your end, because from my end, I'm not able to share the sound. Most people don't know about this, but do you know there's a smart way you can save taxes on your investments? Ever heard of an HUF account? Let me explain. In India, families usually invest together. An HUF is just the way to do that. It treats your family as one financial legal entity, in which Karta is generally the senior most member of the family, along with up. See, ये जो terms है Karta and all that. This is I've already explained to you guys so that you guys can understand that. Just let me check it out. Okay. Other family members who can either be co-partners or members. अब HUF में क्या चीजें होती है? An HUF has its own PAN card, its own bank account, and it can also file taxes as a legal entity. It's not just a joint account. It's a legal entity जो आपको generations तक wealth creation में help करेगा. Now, who can open an HUF account? Well, the misconception is generally generally it's getting changed from funding also. Here are the for now. Let's have some tax deductions and it's second. What? Okay, I would like to answer one question over here. Preetham Das is asking HUF mutual fund. So Dhan has got that option. अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लोगे तो आप धन के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर पाओगे. Okay, Dhan has got mutual fund listed inside Dhan web page and Dhan app. So you guys can do that. There's some buttons की मैंने
નથી એને બદલ પેલા એનું છે ને શું કે આપણું છે એનું છે હા તો એને કેવું પડશે આપણે વિડીયો કેમ ગયો Again, just like the previous step, પણ આ કેવો જલ્દી પડી ગઈ ને એક રીત 10 કરતો ના પડતી ને આપણે મેં જોયું આજે પેમેન્ટ કેવું ના દિવસ બે દિવસમાં अरे यार आप ये शेयर साउंड का ऑप्शन एनेबल करो शेयर साउंड का बटन एनेबल करो ना यार जूम में सेटिंग में पहले से करना चाहिए भाई
जो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन अलाउ। इस स्टेप में आपको एक रेड सर्कुलर बटन दिखेगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन and it will start recording. On the screen, you will see a code. All you have to do is just say that code and record this video and submit it. Our in-house team will be verifying this video verification. So ensure the code is audible. So now we are at the signature upload stage. This is a very crucial stage. Certain things to remember. Let's ensure कि आप signature एक white paper पे करो and the signature is same as on the Karta's pan. Also ensure that the HUF seal is properly imposed over the signature. Once we have this, scan and save that image. जो you Upload signature button. Okay, guys, we tried, but if there is any issue with the voice and you guys could not hear that, then the full link of the video is inside in is in the description. We I would request Dhan team has pinned it. Guys, जिनको भी कुछ issues है regarding the voice, कैसे open करना कुछ समझ में नहीं आया and all that. So it is the how to open that whole video link is in the chat box. It has been pinned, right? So you guys can go through it at any point of time at your own time and comfort. We have pinned it. Guys, can you see the pinned comment? Right? And one more time, I would like to say a big thank you to each and everybody of you for coming us, joining over here. And Dhan team is there to help you. If I can help you in any way, if you think that I can be of any help to you, do let me know. You can reach out to me on my YouTube channel, on my Insta, which reads as C Amit Popat at both sides. And we are from Ahmedabad. So if any point of time, if you need my help, I'll be more than happy to help. Thank you so much, everybody. Again, okay, corporate account I think is offline. Corporate account के लिए आपको offline करना पड़ेगा, Sam. You need to follow the offline process. Okay, meanwhile, before I just close the session, anybody, any question, I'll be more than happy to answer any question that you might have in next few minutes. I have HUF Demat account done, but getting access, but not getting access in mutual fund.
Okay, so we'll check that out. I think there should not be any issue, but if still there is anything, then team, I would request you, क्या प्लीज चेक कर लेना एचयूएफ में म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं दिख रहे हैं. ठीक है, हिंदी बोलो, हिंदी बोल लिया. और कुछ एनी अदर क्वेश्चन? जो वीडियो हमने एचयूएफ अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करा है, दैट उसका लिंक आपको यहाँ पे ऑलरेडी चैट बॉक्स के अंदर मिल गया है. आप वो वीडियो को देख के यू कैन प्रोसेस योर ऑफलाइन ऑनलाइन एचयूएफ अकाउंट. इज देयर एनी क्वेश्चन दैट आई कैन हेल्प यू? तो जरूर से बताइए, अदरवाइज थैंक यू सो मच. एंड आई होप टू स्टे इन टच विद ऑल ऑफ यू थ्रू धन इन कमिंग टाइम. आगे अगर कभी धन कुछ सेशन के लिए बुलाएगा, I'll be more than happy. And otherwise, you guys can always stay in touch with me. Thank you so much, everybody. We are signing off for here. God bless you. Good night. Have a wonderful time. Thank you so much. And I hope this session was valuable. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. I'll sign off with that. Thank you.